Good evening, everyone. My name is Himanshu Modi, and we have only two partners right now. And Global can hear us. Who is Global? Global can hear us. He is Mr. Surendra. He is correct. He is joined through desktop and he is not having a microphone, but he can hear us. Okay, because it's not joined with the internet audio. That's the reason I'm asking. Yes, yes. Because now he can hear us. I don't know whether he is able to hear us or not. Okay. So before I start, I just want to understand what is your actually. Anybody has any questions specific to some modules, or shall we start with some particular how to set up the Tally security and how this works? Or first, let me check with the partners. Is there any specific questions you have? Mr. Mahesh, you have any question? Surendra, Sanchita? Yes, महेश जी, क्या क्वेश्चन है आपका? महेश जी, Mr. Mahesh? Mr. Mahesh, you there? Hello? Hello? Mr. Mahesh, if you're not able to speak, please write it down in the chat box. Okay, so let me start with the training first. So can you see my screen? Everybody can see my screen? Yes, we can see. You can see the Secura? Yes. Not here. Zoom. Zoom. Yes, now we can see. You can see now? Yes. Okay. So first, let me start with the Secura work only. Secura guard only. So what we provide in the guard right now in the solution as a solutions, just share full screen. So you can see my screen, right? And in our Secura guard solutions, what we provide you the option here. So we provide you when you work with the multiple employees. Okay. So what we provide you here option is in the module management, master setting, we provide you configure Tally mode. So what this configure Tally mode does means, so in your network, so what we do here in your network, install the Secura network, we configure your network in such a way that in the network you have data, but nobody can able to access the data folder. Only they can view. And as an administrator, you can see the data, you can access the data, everything you can do. But as an employee, they will see the folder, but when they click on the link of the folder, it will show you access is denied. So now you can see this administrator password it is asked. I'm just entering my password. So I will enter. So now you can see here, we provide you the option, you can write down this, what you can do here, you can create the folders company wise. Like in your computer, you have a Tally folder, you have a data folder. Okay, so this is like, you can see this, I'm not able to access. The same way you won't able to access the data folder till we allow you to access. So let me allow you to access. Now you can see here, I allow the access now to the folder. I can see the data folder. Now what I can do here, I can do some copy of the data right now.
just for the demo purpose. I can create the folders, different folders like company wise, company one account, and you can, in that company, I can create the folders. And if I have a private folders, means want to keep some private data. So what I can do, I can add my private data also here. So this is how we provide you the options. You can create multiple different folders company wise. This is company one, company two, you can create like this. Okay, and this is how you can create one folders. And based on the company wise, what you can do here in options we provide you in Secure Guard, you can write down here company one or company two, and you can set the public directory path and private directory data path. So let me show you. If I set this company one, and this is the normal data path, I'm just copying this data, and I just paste here. Copy paste will not work. I need to write down because it's a problem with the copy paste. Let me check. Because in Zikara by default copy paste will not allow. Now I'm just copy pasting, and what I'm doing, I'm just setting up the private folder also. Okay. And username password I can set. And I can save this folder. Now what we provide you the option, these folders you can allocate to the employees, different employees. So whatever the employees you created, this is user 2. You can see the configure tally mode, and I can click on the plus button and I can assign the which folder I want to assign. So I want to assign company one folder. Sorry, I click wrong thing. So let me go again. So I can go in the configure tally mode, click on the plus button, and I can allocate the folders. Actually, I'm setting up the new cloud, which is not required. By mistake, I'm doing that. Okay, and I can just click on the save. Now, when you go to the configure tally mode, you can see I assigned this user, this company one. And now I also able to assign you the options if he is allowed to access the private area or not. So you can see here there are multiple different type of information available here as a security point of view. Block the secure outside out IP range. You can block the IP. You can block the USB. So that you can do. You can see the configure tally mode again. Enable Outlook plugin. This is different functionality. Then we provide you password change. Whatever you want to change the password, you can do that. And if you want to allow the user to access the secure private area, you can do that here. Okay. Now, this is the employee configuration. So when the employee register the devices and when they download the secure, they register devices, they configure their account. When they start the tally from here, so for example, let me show you, they will start the tally from the 9 dots. You can see the 9 dots. We provide you the option, you can start the tally from here. You can see the tally. And if I start the tally, you can see this which folder I'm allowed to access now. You can see there are multiple folders are allocated to my employees. So they can access the which folder I am allowed to access it. So now I am allowed to access this folder. When I open it, will start the tally and it will show me the folder data. Okay. So this is how tally works. Anybody has a question here? आपको किसी का कोई questions है? No, please continue. Okay. तो यहाँ से आपका टैली चालू होगा. जैसे टैली बंद होगा, आपका डेटा सर्वर पे आ जाएगा. And what we provide you the option here, automatically backup will be taken care. When you go to the secure cloud, device wise, आपको यहाँ पे आपको device wise सब folder दिखेंगे. Okay. And if you have a data folder, you can see the data here. And what we also provide you the option in users, you can go to the secure work and you can see the data backup, data file backup here. Latest data file will be available here only. You can see the data backup available here.
and the data will be taken with the incremental backup. Okay, and you can recover the data. So for example, this is my file and I want to see my revisions. I can click on the three dot and I can see the revisions. You can see this, I created one revision. So आपका क्या होगा कि जो incremental backup ऐसा हो जाएगा, अगर automatically backup होता जाएगा, so you don't have to worry, and all these files are encrypted. Nobody will be able to read the files, copy करके लेके जाएंगे, लेकिन उसका कोई use नहीं रहेगा. So I will show you when I download this file. If I have rights, if I don't have rights, then I can't download the files. But I am logging as an admin. That's the reason I can see the rights. Okay. तो ये डाउनलोड हो जाएगा और मैं कॉपी करके लेके भी जाऊंगा, लेकिन मैं उसको ओपन नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑल द फाइल्स आर एनक्रिप्टेड विद द रैंडम कीज एंड कीज इन योर कंट्रोल, नॉट इन एज अ यूजर कंट्रोल. ओके, टिल दैट टाइम एनीबॉडी हैज अ क्वेश्चंस? अभी हमने सिक्योरा में अंदर और एक फीचर्स किया है, जो फीचर यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. हमने अभी क्या किया है कि हम आपका कंप्यूटर है, अभी ये जो मेरा डेटा है वो ऑफिस में पड़ा है. ओके, एंड आई वांट टू कनेक्ट विथ माय ऑफिस पीसी. तो मैं काम करता हूँ, एक मिनट में ऑफिस पीसी के साथ दूसरा पीसी के साथ कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ. जस्ट फॉलो. अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारे सिक्योरा में और एक फीचर्स जो हमने डाला हुआ है. I'm just sharing my screen again. Now you can see this. I have my other PC. ये मेरा जो दूसरा पीसी है जिसके अंदर मेरा डेटा फोल्डर यहाँ पे पड़ा है. वो डेटा दिखा रहा हूँ. सी ड्राइव में मेरा डेटा पड़ा है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने डेटा मेरा शेयर किया हुआ है डी ड्राइव में, सॉरी, और डी ड्राइव में मेरा फोल्डर पड़ा है टेली 9 ERP9 में. ये डेटा फोल्डर का मेरा डेटा पड़ा हुआ है एंड दिस फोल्डर आई वांट टू एक्सेस फ्रॉम माय लोकल कंप्यूटर. दिस इज माय ऑफिस पीसी. अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे कंप्यूटर में मैं क्या करूंगा, आई विल गो बैक हियर और मैंने अपने ऑफिस का एक आईपी, आपका जो भी आईपी रहेगा स्टैटिक आईपी, वहां से आप उसको लॉग इन उसको एक्सेस कर पाओगे. जैसे अभी मेरे कंप्यूटर से मैं देख रहा हूँ. ओके, अभी मैं आपको मेरे कंप्यूटर से दिखाना चाहता हूँ. ये मैंने मेरे कंप्यूटर में जेड ड्राइव मैप करके रखी है. अभी ये मेरी ड्राइव है, मैंने मैप करूंगा. फर्स्ट टाइम मुझे कॉन्फ़िगर क्या किया हुआ है. अभी मुझे एक मिनट पासवर्ड पूछेगा, जस्ट सॉल्व. एक सेकंड चालू रखिए, जस्ट चेक करना पड़ेगा अलाउ किया है कि नहीं किया है. ओके, अभी हमने क्या किया है कि ये पीसी जो है उसका कौन कनेक्टेड है और उसको क्या क्या एक्सेस देना है वो मैं दे रहा हूँ. एक मिनट, अदरवाइज मुझे एक्सेस नहीं मिलेगा. आई नीड टू गेट द एक्सेस.
ओके, आई गॉट द एक्सेस नाउ। तो अभी ये क्या होता है कि जब भी मेरे को एक्सेस मिलेगा मुझे यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। तो दिस द यूजर नेम पासवर्ड इज आस्क्ड टू मी। जस्ट छोड़ो ना, मैं चेक कर लेता हूँ फोल्डर इस यूजर नेम पासवर्ड क्या सेट किया था। जस्ट छोड़ो। तो नाउ यू कैन सी हियर, ये जो टैली फोल्डर है मेरा, उसके अंदर मैंने क्या किया है, यहाँ पे सिक्योरिटी में जाएंगे। अभी मोहित करके एक यूजर है जो गमोट मोहित है, उसको एक एडमिन यूजर है। एक टेस्ट करके यूजर है, उसको भी एक्सेस है मेरा। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मोहित से भी लॉगिन कर सकता हूँ, टेस्ट यूजर से भी लॉगिन कर सकता हूँ। तो मुझे अगर टेस्ट यूजर का मेरा पासवर्ड पता है मुझे, तो मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ। I just need to check the password because मैं पासवर्ड रिसेट कर देता हूँ just for your information, just for पासवर्ड रिसेट कर दूंगा तो भी हो जाएगा। अब तक किसी को कोई क्वेश्चन है? और ये जो नेटवर्क है मेरे ऑफिस में कंप्यूटर है, और मेरे जो घर पे पीसी है वो मेरे घर पे है, मतलब ये जो पीसी मेरे घर पे है। किसी को पता है पासवर्ड कैसे चेंज होता है विंडोज में यूजर का? चलिए, फॉरवर्ड द पासवर्ड। महेश जी, आपको पता है पासवर्ड कैसे रिसेट होता है? Windows 10. या विंडोज 10 में जो यूजर है उसका पासवर्ड चेंज Right click on your start menu. राइट क्लिक किया मैंने। यस। Computer management. कंप्यूटर मैनेजमेंट, यस। क्लिक किया मैंने कंप्यूटर मैनेजमेंट में। आएगा शायद, टाइम लगेगा। हो नहीं रहा ये ऊपर कंप्यूटर मैनेजमेंट, कुछ हो नहीं रहा है। तो इधर ये डेस्कटॉप में जाके करूँ मैं, ये अपना माई कंप्यूटर में दिस पीसी में मैनेज। Yeah, can do that also. शायद ये एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स का इश्यू है कि क्या है, करने नहीं दे रहा है मुझे। आपका वर्जन कौन सा Windows 10 का? विंडोज 10 का वर्जन एक एडिशन मीन। एक मिनट में ऐड यूजर कर देता हूँ। एडिट यूजर तो है इसमें, चेंज अकाउंट टाइप हो जाता है इसके अंदर, स्टैंडर्ड है कि क्या है वो होता है। और एक काम करता हूँ, नया यूजर बनाता हूँ मैं। एडिट यूजर्स आ गया, ऐड फैमिली मेंबर आ गया। वो टीम भी मुझे पूछना पड़ेगा, टीम में सब भूल गया हूँ यहाँ पे। सो आई नीड टू चेक। मतलब अभी क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरे कंप्यूटर है ना, उसके अंदर से मैं जब भी ट्राई करूंगा यहाँ से, मुझे यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। अगर मैंने सही यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया तो ऑटोमेटिकली मेरा ये पूरा डेटा एक्सेस हो जाएगा, और वो डेटा मैं टैली में एक्सेस करके मेरा टैली भी चलता है। दैट्स व्हाट आई वांट टू शो इट टू यू। तो मतलब मेरा टैली मेरे ऑफिस में पड़ा है, मेरे घर पे पड़ा है, कहीं पे भी पड़ा है, तो मैं यहाँ से एक्सेस कर पाऊंगा और उसको सिक्योरा के थ्रू बाद में मैं
उसको मैं एक्सेस कर पाऊंगा। अभी तो मैं खाली वन टाइम मैप कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फोल्डर एक्सेस मिलेगा, लेकिन बाद में जो डेटा एक्सेस का पाथ है वो मेरे को यूजर नेम पासवर्ड जो मैंने यहाँ पे सिक्योरा में सेट किया होगा और वहां से मिलेगा मुझे। सिक्योरा में जब भी मैं टैली स्टार्ट करूंगा ना, मुझे यहाँ पे पूछेगा कि कौन सा फोल्डर ओपन करना है, और फिर वो उसके बाद वो यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा फोल्डर वाइज। अब वो फोल्डर वाइज यूजर नेम पासवर्ड में कोई भी सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है इतने सारे फोल्डर्स है, और वो फोल्डर वाइज में जो भी पासवर्ड सेट करना है वो पासवर्ड सेट हुआ होगा, वो मुझे पूछेगा, और इस तरह से आपका डेटा एक्सेस होगा। और यहाँ पे फायदा क्या है कि आपका जो भी डेटा है, जैसे मैं टैली क्लोज करूंगा, ऑटोमेटिकली उसका बैकअप मेरा क्लाउड डेटाबेस में सिंक हो जाएगा। अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन या क्वेरी है इसमें? No. Sanchita, you have any questions? Global, आदेश जैन, आपको कोई क्वेश्चन? एमटी रेडी? Any question? Hello? Any question? Anybody has a questions? किसी को कोई क्वेश्चन है? हेलो, अरे नीलोफर, We Yes, can sir. hear you, sir. Yes, we आपका can hear. किसी का कोई क्वेश्चन है कि नहीं? I think Sanchita has, let me confirm, you mean can remotely access the complete system? रिमोटली एक्सेस नहीं कर सकते, उसका डेटा एक्सेस कर सकते हैं। मतलब MSTSC करना है, ये सब कर सकते हैं, लेकिन MSTSC आपको एक कैन लाइसेंस लगेंगे, उससे आप कर सकते हैं। We can access the data, everything from the home. ಮನ್ನಿದೊಂದು ಚೆಕ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿ ಹುಬ್ಳಿದ Hello. ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. Okay. Adesh sir, I wanted to ask you, like you were having some questions, so you can ask to Himanshu sir. Will give you the answer for that. Sir, Sanchita has write a question on chat. Please check. Just hold on. Okay. Let me confirm. You mean what the remote access of the system provide the master system on, right? Yes, you can connect to any system in your office. Like आपको चाहिए कि आपका master system access होना चाहिए, तो master system access होगा। अगर आपको कोई दूसरा access करना है तो दूसरा access होगा। It's up to you which system you want to access. और कोई क्वेश्चन है किसी को? हेलो Mahesh sir and Yes, sir. Mahesh sir, do you have any questions, queries? Nitin sir, Mr. Reddy? No, no, no. So Okay, मतलब आपको एग्जिस्टिंग अभी जो कस्टमर्स है उनके पास से क्या क्या रिक्वायरमेंट आती है जो यहाँ पे फुलफिल होती है, और क्या लगता है कि आपको यहाँ पे फुलफिल होगी अभी? Manchu, हाँ बोलो। no, to be frank, I joined her, but I was not able to concentrate because I was getting some calls and some people Okay. are sitting in front of me. Okay. Next training, I will go in detail, and if any queries, I will put on that day. But did you understood the product? That's the objective here. So why we are here to understand the product. Outright, the purpose for what it is required, I have understood, and that based on that, I am convincing the customers and trying to close the order, sir. Good. But are you finding any difficulties here? So I can help you. Means customers asking some question in which you are not able to answer here, and so you can ask me here questions, please. Yeah, no. So far, customers have not they put any kind of questions which I am not able to reply them. Okay.
So we have to see in future as and when we come across with the customers. Okay, sure, sure. Thank you for your feedback, sir. Mr. Adesh Jain, you have any questions? Mr. Adesh, you there? Hello? Mr. Adesh, you have any question? Okay, Adesh sir, do you have any question? Please answer it. okay. MT ready? Any questions? I think Himanshu sir, like people don't have any queries. If they have, so we'll Okay, okay. No problem. Ashmit, Akshay, you want to say anything here? Because you are also talking to your partners. Are they have any questions which you want to answer here? Not at the moment. Akshay, the person who were asking the questions in today's product demonstration, you can ask him right now, Himanshu sir, so that they will join tomorrow. So we'll That have will have a separate conversation, Nilafar. separate one. Okay, Okay. no yes. worries. So Nitin, you have any questions? You were asking something about how to test the infrastructure regarding Secura Cyber Shield. Hello, Nitin, can you hear me? Yes, yes, I can hear Yeah. you. So you were asking something regarding the Secura Cyber Shield, how we are going to test the infrastructure and all. Yes. So Himanshu sir, actually Nitin wanted some clarity on Secura Cyber Shield. Okay. Where how So we are going basically, to... yeah. So basically in Secura Cyber Shield, let me clear first thing. It's a awareness training program, and the testing tool which we are talking about is we have discontinued the testing tool right now. Okay, so we are not going with the testing tool right now. Previously, we are providing the testing tool. Now, what we are doing, we are just focusing on awareness training only. Okay. Okay, so we have stopped providing the testing tool. Access. Any more questions here? No. Are you what is your like feedback for the product? Currently, I haven't operated it properly. Okay. Any specific reason for that? I was not having that much of time to explore this product actually. So do you think this product is useful or you don't? Yes, definitely. Okay, just to let you know, let me check my understanding. That's the reason I asked this. So I can understand, okay, this product need is there or not there. Sorry, I didn't get you. Means I want to understand just that product need is there or not there. Simply there. Sorry, come again. Sir, for this site from Secura Software. Hello. Yeah, so what I'm asking you a question that I just want to understand. You have any understanding about the product or you have some questions about the product? Are you aware about this full product? Are you aware about the full product or not? अभी नहीं बात करते ना, रुको मैं थोड़ी देर में. Hello. Anybody has questions? Sanchita, you have any question now? Okay. Akshay, Ashmit? No questions at the moment. No question, sir. Okay. Soma, you have any question? Sir, not yet. I don't have any question. Okay. Okay, no problem. So shall we conclude this meeting?
If nobody has a question, then Yes, sir, we can Yes, conclude yes. this meeting. Continue. okay. Okay, thank you. Thank you for everyone for coming and spending your time here. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Continue.